Hariom everyone. Can you all hear me and see me clearly? Thank you. Hope and pray that you're all doing well. Before we start with Lalita Sahasranama chanting and then into Bhagavatam, we'll start with the invocation shlokas and then proceed into Lalita Sahasranama. So please join me. Oh. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः. Let us begin Lalita Sahasranama chanting. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्.
ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्ड पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरा मज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चंपकाशोकनाग सौगंधिकलसत्कचा कुरुविंदमनिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभा मुगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्य गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभ नासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूता तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरतनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारा द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षिदिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपी मन्दस्मितप्रभापूरा मज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्या चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्य सूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूर कमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाली लता फलकुचद्वयी लक्षरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्य पट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौस्तुम्भ वस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारा जानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्त स्मरतूर्णाभजङ्गिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठा जयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधितिसञ्छन्ना नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजाला पराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरा मण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्ता शक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढा सिन्धूरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्व कोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढा सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढा मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढा दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्ता शक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपा निरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्ता बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचिता विषङ्गवदतोषिता विशुक्रप्राणहरणा वाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोक कल्पितश्रीगणेश्वर महागणेशनिर्भिन्ना विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्ता शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्ना नारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धा सुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धा सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैका स्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठादक्कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी
मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तटिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्तु तनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचारा शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुंदरी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चंद्रविद्या चंद्रमंडलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचंद्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराज निकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पंचप्रेतासनासीना पंचब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घनरूपिणी ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपंती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविंदरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्य परायणा भानुमंडल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावलिः सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरी कृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोह शुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूप विवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता
राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्य रणत्किङ्किणीमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कंदा करुणा रससागरा कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विंध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचनी संहृता शेषपाषण्ड सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्ता समाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूता ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षितिरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओड्यानपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहो यागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सद्यप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवता युक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिका रूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयना कुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतमो भेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृति सन्ध्या द्विजबृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघोर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्भा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिस्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रुशोभना सुरनायिका कालकंठी कांतमती क्षोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिः संवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्ज अनाहताब्जनिलया श्यामाभावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यौघावृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवदना राकिन्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्राधिकायुधोपेता धामर्याधिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा
शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्दिन्यातिसमन्विता मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था ववनोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्ष निषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माद्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृददोर्लता महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करी भूता कमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्तेन्द्रधनुप्रभा हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहा सोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्ड जननी दिव्यविग्रह क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्धूरतिलकाञ्चिता उमाशैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठा निवेशिता निजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धासागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी
सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जारम्बादिवन्दिता भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यादवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्त चित्तकेकी घना घना रोगपर्वतदम्बोलिर्मृत्युदारु कुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्ड मुण्डासुरनिषूधिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदा त्रिसुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुमप्रिया वीराराध्या विराड रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परात्परा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्त्रा पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोधरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यातीता कलात्मिका गंभीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्टा कान्ता कान्तार्धविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलीतरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्त्रा त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसार निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वपद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया
सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्यादरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवला नर्घ्या कैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोन्मनी मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्र वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घशासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितासहस्रनाम स्तोत्रकथनं सम्पूर्णम्. Give me just 1 minute. I'll be back. Hari Om. Let us do the invocation for Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Satchidananda Rupaya Vishwotpathyadihetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Numaha यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. Parikshit ji has approached Sri Shukdev ji Maharaj, asked him the pertinent question, and excited Shukdev ji, because very rarely you come across a student worth the caliber where you feel very inspired to speak about. So to him, to such Parikshita, Shukdev ji Maharaj, he starts explaining. And this particular part of sadhana is the kind of mindset that every seeker should raise oneself up to. Whatever be our upasana, whatever be our uh, shravana, manana, nididhyasana, the caliber with which we should bring our mind with chitta shuddhi and chitta ekagrata is to this point. Though here the message is given by Shukdev ji, Antakale tu Purusha, 15th shloka of the Dvitiya Skandha Pratama Adhyaya, first chapter. There, he is talking about Antakala, the last moment. Now, everybody should treat the present moment as the last moment because we are not assured of it. So, what kind of mindset should we have? Here he says, Shindyat asanga shastrena spruham dehenu yecha tam. That one should have the sharp sword of Vairagya. Asanga shastrena. The same word comes in Bhagavad Gita as well. Asanga shastrena dridhena chitva. So that Asanga Shastra, that Vairagya is our Asanga Shastra, with which we remove all the attachments of this Ahankari Jivatma is an extension of the attachment with ourselves as looking at it as a body. Everything else is an extension of that only. Almost everything. 99.99%. Everything that we have around, that we are attached to, is purely from the standpoint of this bhava, which we have given a very serious note of Satya Sankalpa, that I am this body. And it is an extension of that. So, with this Asanga Shastra, what has to be removed? Overcome this identification with this body, with this conglomerate of body, mind, and intellect. Now, if this is removed, all the other attachments that depend on it are automatically gone. Abhyasen manasa shuddham
Trivat Brahmaksharam Param Mano. Now he says, Abhyasen Manasa Shuddham, with such a focused mind, chant Omkara. Trivat Brahmaksharam Param, that which is the Brahmakshara, that Brahmakshara which is mentioned in the 16th chapter, 8th chapter of Bhagavad Gita, the Upanishads point it as the very symbol of representation of the entire representation of that Paramatma Tattva, that Brahmakshara. Chant that. So fill in your lungs with the inhalation, and as you're breathing out, chant that Omkara. How? Not like in a quick succession, but as long as the breath can last. Om. Brahma Bijam Avismaran. This Omkara, it it helps to transcend several obstacles. Therefore, Shukadev ji says, bring your focused mind to a sharp edge with this Omkara repetition. And then Tatra Ekavayavam Dhyayet Avyuच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचिन्न स्मरेत पदम तत्परमं विष्णोः mano yatra prasidati. Here Shukdev ji says, at this point, once the mind has become focused, let your mind now start visualizing your Ishta Devata in all format, like visualizing it from foot all the way up to the beautiful smile, glowing, radiant face, eyes. May your dhyana get fixed. May your visualization get fixed in that Shri Mukha of Bhagavan. Because with this kind of contemplation on that Bhagavan alone, Rajastamobhyam akshiptam vimudham mana atmanaha. The fears of the tamasic nature and vikshipta nature, wherein the rajasic mind jumps all over the place, can be transcended by bringing that focused mind to visualize this form of Bhagavan. And then at that Shri Vigraha, Shri Mukha of Bhagavan, let your heart be soaked in bhakti. यस्याम संधार्यमानायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योगः आश्रयं भद्रमीक्षतः. And the one who fills in their heart with parama bhakti to Bhagavan, at this point their hearts become pavitra, punita. So this visualization should be strengthened. And when done with Shraddha, the heart becomes pure, bhakti becomes intense. When bhakti becomes intense, the heart's purity is stabilized. At this point, Samrat Parikshita, he says,
Rajovacha, up until here we had seen last week. Rajovacha. यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यदु यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्. Hey Bhagavan, Shukadev ji, you talked about bringing the focused mind to visualization of that Bhagavan and have dharana of that Shri Mukha of Bhagavan. How should that dharana be practiced? Here, this is a very beautiful, very important step of visualization, contemplating on the Shri Vigraha of Bhagavan. This practice is the crux of Purusha Suktam, crux of the 11th chapter of Bhagavad Gita, that which is indicated. How do we personalize it, visualize it, and come to realize that form in our own hearts? How should that dharana be done? Dharana is to invoke and abide in. So Shukdev ji says, first, जितासनो जितश्वासः जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया. These Mahatmas, in a very short shloka, they give the entire sadhana that we have to do for the rest of our lives. Just in that 23rd shloka, all that we struggle to get to, he has mentioned it so casually that this after having done, such a mind should bring that Shri Vigraha dhyana, that upasana of that Shri Vigraha as dharana, and abide in it. अब अपने लोगों की तो पूरी जिंदगी कट जाए ये श्लोक को साकार करते करते. Whole life now has to be spent on gaining that which is pointed in this first line of the 23rd shloka. First pointer. What is it? Jitasanaha. That is why, in growing up in our tradition, we were always told. I remember I used to be woken up early in the morning, and first thing that we had to do after washing the face and to chant the mathematic table, two one two, the tables, mathematic tables. And from anywhere in the house, whether it is father or mother, the first thing they will say, sit straight. And coming in as a teacher, when I came, even today, it is sitting with these Balavihar kids. Half the time, most of the teachers we spend on making them sit straight. Because when you sit straight, what is happening? Your entire prana shakti is in its complete loop. When you're casually trying to wind off, watch some news channel or TV or something, it is fine. But when you have to study, when you have to learn, when you have to do abhyasa, when you have to do dharana, dhyana, then this jitasana is important. One particular position in which I can sit for
the entire abhyasa period of sadhana. Whether it is puja, whether it is parayana, whether it is japa, whether it is dhyana, whatever is the abhyasa. Supposing I have taken a sankalpa of chanting the entire Hanuman Chalisa, can I do it while walking around here and there? You can. But the prana shakti will have the absolute benefit of it only when you sit down in one position, not moving. Hanumanji says that Ravana's son, Indrajita, he starts suddenly doing yajna karma, and if he were to accomplish and fulfill that, he would have become invincible. So Lakshmanji, Hanumanji, everybody goes and disturbs his yajna karma. Hanumanji, when he comes back and he reports to Ramji, he praises Indrajit for his dharana shakti, and he says, I have seen several sadhakas, but none like Indrajit, where his jitasana, jitashvasa, jita sangaha is beyond measure. He is no ordinary fellow. He is an enemy. But even in that enemy, and what he is doing is invoking to destroy you. But with the nishtha with which he does, Hanumanji praises. Even the Rakshasas had Jitasana. That is what I wanted to indicate. To be able to sit and focus, wherein no limb of the body is moving, constantly moving, shaking, nothing of that. Put it to rest first. Like when you want to get into a building after your driving has been done, isn't it expected of us that our parking be safe? That you cannot put it in some neutral gear and it keeps rolling even after you get down. It can lead to accidents. Similarly, if I have to focus on something higher, subtler, this sthula sharira, gross body, should be put in a proper parking. Oh, Swamiji, I have a favorite asana. Can I sit in that? Shavasana. Baba, when we have the expertise to sleep while sitting in Shavasana, what will happen? The rule is as the TSA increases, total surface area of our body taking support. For this arrangement to reach across to you through this medium, I have to sit on a chair. But even while sitting on the chair, the backrest, there is at least an inch and a half gap. I'm not like resting on the back. The total surface area should be minimal and yet be comfortable. And sit in that position to not move. Jitasana. And Jitashvasaha, second step. Jitashvasaha, to regulate the breath in such a way that the inhalation and exhalation is slowest. Low inhalation and exhalation process. Jitashvasaha. Jitasangaha. Jitasangaha, win over all the attachments by cutting our mind away from that indriyas. Indriya Vishaya Vastu can be removed when the mind is removed from that indriya.
That is not the time to think about ice cream. That is not the time to think about chat papadi. That is not the time to think about some music. That is not the time to all indriyas and their indriya vyapara, their interactions with the field of indriya vastu has to be slowly but firmly withdrawn. Jita sangaha. Jitendriya, all the other organs of action put to rest. Then, कूले भगवतो रूपे मनसंधारये धिया. In the physical form of that Ishtadeva, many people ask, do we need to have the form? Meditating, or let me use the right word, Upasana of the Saguna Sakara helps the individual weaken the identification with the Sthula Sharira to a point wherein I can thereby transcend it. Are we attached to this Sthula Sharira, meaning this gross body, the identification that I am this body? Then no questions asked. Bring your mind to that Ishtadeva Upasana, inculcate that bhakti so that his anugraha is there on us to transcend this bodily identification. When the mind is engaged in devotion at his feet, this identification weakens. So, Phule Bhagavato Rupe, in that Saguna Sakara form of that Bhagavan, let this Dhi, Buddhi, be dedicatedly offered. And now he explains the Siddhanta. He says, विशेषस्तस्य देहोऽयं स्तविष्ठस्य स्तवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्. That Ishvara himself, which I am visualizing, is verily this that which I call as creation. Not just the space of creation, but bhutam bhavyam bhavachayat. The past, present, future, the entire concept of time and space is the very expression of that Ishvara. Because these seven layers, sapta avarana samyute, dances forth on the substratum of this conscious principle called Ishvara. What are they? He describes the seven layers in the 25th shloka. He says, Jala, Agni, sorry, 24th and 25th shloka. He says that these tattvas are the five elements, then Ahankara slash Mahat Tattva and Prakriti. That Paramatma verily is expressing through this creation. The substratum is that Chaitanya Swarupa alone.
But what do we see? Instead of seeing Chaitanya Swarupa, we see at the most utility. Behind that utility, we see Nama Rupa, the shape and the form and the name that is associated with. Most of us, because of our education and training, we would probably, the subtlest that we would come to understand is every padartha that you see, it is nothing but atoms. This much we come to understand. What Shruti is saying is, even for the subtlest layer of matter to exist, there has to be a platform on which that can dance forth as this creation. That substratum is called Chaitanya Swarupa, that Ishvara. Without the screen, there cannot be a projection of the movie. That screen on which this projection is being made is where I have to bring my attention forth to. Now, in this Virata Rupa, all the 14 lokas, 7 upper lokas, 7 lower lokas, all the 14 lokas are the very expression of that Paramatma. The same description we find in Purusha Sukta. The same expression is revealed, not just described, revealed in the 11th chapter of Bhagavad Gita. All these 14 lokas, where even Arjuna gets terrified. Why? The very movement of this Ishvara Tattva is called Kala. Kala, time slash space. And Arjuna is terrified. What happens in this Kala? Everything gets consumed by this Kala. And how is it depicted? It is depicted as the mouth of that Ishvara which is swallowing up everything. Now visualize that everything is being swallowed up. He was scared. Oh my goodness. How can I see this? They say, Bhagwan, everybody is scared. I am also scared. So all these aspects are the very expression of that Ishvara alone. पातालं एतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोत्थगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेः ऊरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघन्नं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति. So all the 14 lokas, starting from the feet all the way to the Sri Mukha, is explained as the very expression of that Virata Rupa. And when we chant Vishnu Sahasranama also, in the Dhyana Shloka, the same expression is described within those 3 shlokas. Remember those 3 shlokas? क्षीरो धन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकते मौक्तिकानां
माला क्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैदरभ्रैदुपरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयाद् अरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः. So the form is described. And then भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे. So the entire creation in that Sri Vigraha is explained. Now, the beauty is whether you are a Shakta Upasaka, Ganapatya, or Vaishnava, or Shiva Bhakta, when the Virata Rupa is explained, it is pretty much the same description, and what you're visualizing is your Ishta Devata in that Vishwarupa. Now, as our this Vishwarupa Upasana becomes stronger and stronger, how does it reflect in our day to day life? It reflects as recognizing every single particle of this creation as Bhagavan and Bhagavan's presence itself. It is not just that this Bhagavata book has to be sacred and I touch my forehead with. Every If every particle is that Paramatma himself, first point, can there be even an iota of this creation? I'm not going into the supreme status right away. I'm just talking about the first point. What is the first point that I want to point at? Can there be anything in this creation that I can afford to hate? Who am I hating? That Ishvara. So this bhakti, upasana, bhava, what does it do? Not only does that weaken my sharira tadatmyata, with the creation as well, the hatred, the jugupsa, disgust with anything in the outside world starts getting diluted. Am I getting across? And there is a very beautiful point in the 36th shloka. Where does Bhagavan live? It is as the very heart of the Vastu, as the very essence. And the example he gives, Manurmanisha Manujo Nivasaha. Where does Bhagavan live? Bhagavan lives as the very core of that which we recognize as, for example, human being. Where are we? We are seeing that name, that form, and our attachments are for that name, that form. Shastra is telling us something very subtle and beautiful. Don't need to run away from the environment, but that very place where there is an attachment, let us make it more subtle.
Instead of seeing it as my husband, wife, children, as my in-laws and parents and neighbors and friends, start invoking, seeing that Bhagavan in them and serve them. That is the only change that is expected through this upasana to be inculcated. And Gurudev captures this in the pledge, that which we chant with our Balavihar kids on almost every weekend. Service to the nation is the service to the Supreme Self. Service to the humanity is the service to the Lord of Lords. And then immediately, what is the next sentence? We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. It is not like a chore. Chore or kamchor. Chore is English, but kamchor is Hindi. We cut it short. We put all the prayasa and prayatna, but the attitude, if we change that same prayatna, same effort, what it yields is unimaginable peace within. The whole attitude has to be revisited. So here he says um, to Parikshit ji, this kind of mindset, संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थितिविष्ठे स्थविष्ठे मनस्वबुद्ध्या न यतोस्ति किंचित. Now with your buddhi, instill this kind of upasana wherein you see that Ishvara, and in that Ishvara you visualize this entire creation. And when you open your eyes, see that Ishvara in and through every form that is moving, acting, interacting with you. There is nothing to avoid with hatred or disgust. First step. Then we can think about loving everything. Otherwise, what happens? We talk big, big words. Universal brotherhood. Cannot stand your own brother or sister. Universal brotherhood. Within one roof, if we have to stay for the last 10 months because of this pandemic, we get under each other's skin. Universal brotherhood. It says, as the very core of this expression, that Ishvara alone is expressing, your Ishtadaiva is in that very form. How can there be hatred towards that Ishvara who is expressing in these multiple forms? So, hey, Parikshita, let your buddhi abide in this Sarvantaryami Paramatma buddhi, and let your heart get soaked in the devotion of this dharana. Tam satyam anandanidhim bhajeta nanyatra sajjet yata atmapataha. If this kind of upasana
this kind of dharana in that Bhagavan is not practiced, the last line, please pay attention to it. It is very, very difficult to break that jivatva bhava. And as long as that jivatva bhava is not broken, we get sucked into this cocoon of samsara again and again. And adha patana becomes ascertained. Na anyatra sajjet yata atmapataha. Atmapataha, pushing oneself down the abyss of unending misery. Who is pushing? I pushing my own self. What is the anchor? Nothing other than Bhagavan in this form. Let me sum it up for you in few steps. The the very concept of it. The concept is that which I am inculcating as bhakti bhava to this Ishtadaiva, that Ishtadaiva is the substratum, the Ishvara of this entire creation. When I say entire creation, that which I can see, perceive now, and that which I cannot perceive, all of that included. Past, present, future, all of that included is this substratum, Ishvara. That Ishvara is verily expressing in the format of everything that which I am interacting with. Sthavara Jangama, whether it is mobile or immobile. When we go to places like Vaishno Devi or Sabarimala or Tirupati, I'm sure all of you have visited one of these temples, right? When you go, out of question that you have touched the Balaji Shri Vigraha. Have you? Don't shock me by saying yes. I'll drop yahi pe tapak. At the most, with lot of influence. You may have reached to the outside peripheral sanctum sanctorum gate door. You touch that door and feel my bhagya that though I cannot touch the feet directly, I have touched the door of that temple where that Bhagwan resides and feel very, very excited. Pavitra. That very Paramatma is in this Thavara Jangama form all around us. Who is stopping me to not see that Paramatma? My own likes, dislikes to these forms and names that is pushing me away from that Ishvara Tattva. Strengthening through those likes and dislikes my own identity of this Jivatva. So, therefore, now once this concept is clear, then sit down, Jitasana, Jitashwasa, Jitasangaha, Jitendriyaha. These are not Punjabi names. Oh, Jitender. These are the steps that you have to accomplish as sadhaka. Parikshita has already accomplished it. Now, with this dharana, he is pulling his entire system to that one focal point. And to such a focused one,
Bhagavata is unveiled to have the best result. Now, this will be a common exercise expected out of a student of Bhagavata every time they study Bhagavata. That is the connection. Sound? I'll stop here. We'll continue the second chapter next week. Next week also happens to be a very, very important day for us all, is the 25th, where we have Swami Taponji's Jayanti, Gita Jayanti. Gita ji was given to Arjuna by Bhagavan Shri Krishna on that very day. 5,100 and some years. So we will be chanting the entire 12 chapter, sorry, 18 chapters. From 8 o'clock, we will start in the morning. It will be online live. You can join. And then we will end it with some Guru Paduka Puja, Tapon Maharaj Puja, and then Ashtottara Shatnamavali of Swami Taponam Maharaj and Gita Ji's Ashtottara Shatnamavali, then Puja Arati. That is one day, 8 to 12, 12:30. I don't want to put a end time exactly because it depends on how many, who, and what speed. So the chanting process. So it's roughly about 4.5 hours. Then on the 31st, 9 p.m. to 12 a.m., we will do Vishnu Sahasranama Puja, invoking Bhagwan's blessings. We know how 2020 went by. 2021 at least, Bhagwan, Daya Karo. May your Kripa be there that it is something better than, more stable than what I have experienced so far. So let us invoke his blessings for a better year ahead. So that is on the 31st. So with these two announcements, I stop. I request Mama, please unmute yourself. Ji. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सतिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल चहाते कवि कूबिद कह सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना उनके स्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीहू ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि नांदि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे भूतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहूं पति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्मि हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख हुई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा मोय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मडेरा की जय नाथ हृदय मडेरा की जय नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय Thank you, Ma. Can I ask Hari, Brahmachari Hari, to chant 11 times Mahamrityunjay mantra? हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् Thank you, Hari. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Stay safe everyone and see you around in the next satsang. Thank you so